Beta, am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. You can mute yourself. Okay. So if I look at the question, we have 36 students in a class whose average is 30. So 36 students having the average of 30 means what? The total weight will be 36 into 30. Okay, echo. Just wait. You are not audible. Not audible, no? Just wait. Guys, am I audible now? Okay. Yes, sir. Sir, your voice is not audible.
Guys, am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what will be the answer of this question? 34. 35. 34. 35. Sorry, 34. Okay. 34. 35 would be the answer. Okay. What you will do here? The number of student is given. Their average is given. And for the second batch, again the number of student is given and their average is given, right? So you need to just multiply those value and divide by number of student. Okay. Just try this one. The next one. Shumam, I will explain this question. Okay. Don't worry. Years. Okay. 16. All right. Okay. 16.5. A few students are giving 16.5. Okay. Sixteen years. Ah. Okay. So here we can find the total sum of the boys. That will be 20 into 18. The total sum of girls would be 40 into 15, and the total number of girls and boys is 20 plus 40. So that would give you the answer. C16. So C16 is correct. All right. That would be 360 plus 40 into 15, 600 divided by 40 plus 60, 60. Okay. This is the similar question, Santosh. If you go by the previous question, this is again the similar one. 63 student whose average is 32. So what will be the total sum of this group? So this will be 63 into 32. Okay. The total sum of this group will be 63 into 32. So 63 into 32. Okay. Plus. Then 21 student and their average is 44. So total sum of this class would be 21 into 44 and divided by the total number of student. And the total number of student is 63 and 21. So 63 plus 21. You need to just solve this, you will get the result. All right. Now, let me explain one concept to you that is more important. So, just wait. Okay. If I ask you what will be the average of yellow? Any doubt? Any doubt, Shubham? Clear. Okay. Now, coming to a concept, if I ask you what is the average of 1, 2, 3, 4, 5, so you will say the average of this group is 3. Right? Because in case of consecutive term, the average always lies exactly in middle. Right?
If I ask you what is the average of 2, 3, 4, 5, 6, so you will say the average would be 4. Okay, because again these are the consecutive terms. If I ask you the average of 3, 4, 5, 6, 7, so here the average would be 5. Okay, the average would be 5. Now, what is the case here? So let's take this as this is my group. Okay, so now here the concept is if averages decrease by 1. Okay, you can see if averages decrease by 1, so each member of the group is also decreased by 1. Can you see that? I can assume that each one of the member is decreased by 1. Similarly, if the average of certain group is increased by 1, means from 4 it goes 5. So if average is increased by 1, so I can say that each one of the group member is also increased by 1. You can see here from 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7. Is that okay? Right? I hope you are able to see it. Yes, Okay, sir. so this is your first concept. If average is increased by 1, so we can assume each one of the member is also increased by 1. And if average is decreased by 1, so average is also, each one of the member is also decreased by 1. Okay, or vice versa. If I say each one of the Sir? member is increased by 1, it means the average is increased by 1. Yes? सर जो ये एवरेज है ये कैसे हमने पुट की थी 1 2 3 4 5 जैसे हमने जैसे 3 दिया है ये कैसे दिया है हमने देखो Average number? एवरेज अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, एवरेज क्या होता है कि इन नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर दो. कितने टर्म्स है टोटल? मेरे पास 5 है. ठीक है, सो 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय 5. सो एवरेज कितना आ जाएगा? 3. ठीक है, यही बताया था. ओके सर जी ठीक है, और कंसेक्यूटिव टर्म अगर है तो एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होता है. ठीक है, यही तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस स्लाइड में किया था. ठीक है, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. नाउ द सेकंड कंसेप्ट इज, अगर मैं कहूं कि इस ग्रुप का एवरेज क्या होगा 1 2 3 4 5, व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस ग्रुप? सो यू वुड से 3. ठीक है, एवरेज इज 3. अगर मैं कहूं व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस ग्रुप 1 2 4 5, टेल मी व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स 1 2 4 5? 3. 3. 3. Good. 1 + 2 + 4 + 5 divided by 4, that would be 3. Okay. If I ask you what is the average of 1, 2, 3, 4, 5 and 3, what is the average of these group? No, Chandra Prakash, that would be 3. You can check. सारे नंबर्स को ऐड करो, डिवाइड बाय कितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो. 3. 3. Okay. So again the average of this group would be 3. इस ग्रुप का नंबर भी क्या आने वाला है? एवरेज क्या आने वाला है? 3. ठीक है, तो यहां से हमने क्या बात सीखी? अगर एवरेज मान लो किसी सर्टेन ग्रुप का एवरेज कोई नंबर है, ठीक है, देयर इज एन एवरेज ऑफ सर्टेन ग्रुप. इफ दैट एवरेज इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रुप और इंक्लूडेड इनटू द ग्रुप, कैन यू सी इट? अगर किसी ग्रुप के एवरेज को मैं उस ग्रुप से रिमूव कर दूं, यहां देखो, और या फिर उस एवरेज को इंक्लूड कर दूं, सो देयर इज नो इफेक्ट इन द एवरेज. कह सकता हूं? इज दैट ओके? Okay. If any average value Yes, is sir. included or excluded from the group, there is no effect in the average. Clear? तो 2 points हमने क्या क्या सीखे? Now you can just note down these 2 points. Okay, you can make some notes. If the average value of a certain group is included or excluded from the group, there is no effect in the average.
no effect in the average, right? There is no effect in the average. Point number 1. You can just take the screenshot or just note down. Noted? Yes, sir. Yes, sir. Example I will give you more, Santosh, don't worry. We have some question based on it, okay? सर ये And point रिकॉर्डेड number 2. पीपीटी डाल दिया करो व्हाट्सएप में। क्या चीज? ये जो पीपीटी है ये रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप में डाल दिया करो। रिकॉर्ड करके मीन से लिखी हुई पीपीटी या फिर ओनली हाँ जी। पीपीटीज? ओनली पीपीटी आई विल शेयर बाय द इवनिंग एज आई टोल्ड यू इन एट द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, ओके? मैं शेयर कर दूंगा, नो इशू, ठीक है? तो ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या था? इफ एवरेज increased or decreased by any particular value, then each member of the group change accordingly. ये पहले देखा था हमने, ठीक है? कि अगर मैं कहूं कि अगर मैंने एवरेज एक इंक्रीज कर दिया तो ईच मेंबर विल बी इंक्रीज बाय 1, and if average is decreased by 1, so each member is decreased by 1, right? Okay, now we will solve these kind of question, okay? So I hope it is noted. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. all these points are written over here. Now look at the question. If the average weight of 10 student in a class is 30 kg, when the weight of teacher is included, the new average becomes 33. Find the weight of the teacher. Okay, just look at here. कैसे आप इसको solve करोगे? The average weight of 10 student is 30. Okay, average weight of 10 student. So इस class में total 10 student है, ठीक है? The total strength is 10. Okay, and now the average of weight of the class is 30. So average कितना है? 30 है। अब average का meaning मैंने क्या बताया था? Equal distribution, right? That we can assume that the each one of the member is of 30 kg, right? Each one of the member is 30 kg. All right, so each one of the member is of सर 30 आपकी kg. आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? चेक करो। आ रही है, अभी आ रही। अभी आ रही? ठीक है, ओके। थर्टी थ्री। सो सबसे पहले एक टीचर यहाँ आया, इस ग्रुप में ऐड हो गया, ठीक है? तो पहले मैंने क्या अज्यूम किया कि लेट्स अज्यूम द टीचर्स वेट इज ऑल्सो 30, ठीक है? अब बताओ मुझे, अगर टीचर का वेट भी 30 होता तो एवरेज में कोई इफेक्ट पड़ता? देयर इज नो इफेक्ट इन द एवरेज। व्हाई? बिकॉज अभी अभी हमने पढ़ा था कि इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ अ सर्टेन ग्रुप इज इंक्लूडेड इनटू द ग्रुप और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रुप, देयर इज नो इफेक्ट इन द एवरेज, राइट? ये चीज आई समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So first of all, we will assume that the weight of the teacher is also 30 kg. But due to that, there is no effect in the average. ठीक है, उससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन according to the question, इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है? इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि अब नया एवरेज 33 हो गया। पहले कितना था? 30 था, अब कितना हो गया? 33. So it is increased by 3, है ना? The new average increased by 3. Now second Yes, concept. sir. If average is increased by 3, it means each member is increased by 3. बात आई समझ में? If average is increased by 3, it means each member is increased by 3. Second concept याद आ रहा है? ठीक है, okay.
इट मीन्स टीचर की एज या वेट जो है 30 केजी से कुछ एक्स्ट्रा ही होने वाला है। अब वो एक्स्ट्रा कितना है कि हर कोई अब 3 किलो बढ़ गया। ठीक है, सो नाउ इंक्लूडिंग टीचर द टोटल स्ट्रेंथ इज 11 नाउ, एंड 11 इंटू 3, हर कोई 3 किलो बढ़ गया तो इतना ही एक्स्ट्रा अपने साथ लेके आया। सो व्हाट विल बी द वेट ऑफ द टीचर? 30 प्लस 33, दैट वुड बी 63। So 63 would be the correct answer, option number A. Vikrant, I will share it, don't worry. I will share in the LPU live chat. Is that okay? So first we have to assume the weight of the including Yes, sir. person is equal to the average weight. All right. Okay. Now coming to the next one. Just try this one. $55 kg. 55. ग्रुप लिंक आप लोग उसमें ऐड नहीं हो LPU लाइव पे? देखो LPU लाइव पे आपके पास LPU लाइव है? डू यू हैव LPU लाइव? LPU लाइव मैसेंजर है LPU का, उसको आप डाउनलोड कीजिए। ठीक है, लॉग इन करो। ठीक है, LPU लाइव मैसेंजर है, ये आपका प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो LPU लाइव। ठीक है, ऑलरेडी आपका एक ग्रुप बना होगा उसमें, उसमें आप ऐड हो। यस, ईच वन ऑफ यू, दोज हु आर इन दिस क्लास, दे आर ऑलरेडी देयर इन LPU लाइव ग्रुप। तो LPU लाइव मैसेंजर आपको केवल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, दैट्स इट। आई विल शेयर ऑल द स्टडी मटेरियल कंटेंट, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, गेस आई विल शेयर द PPTs देयर आल्सो, सो नो इशू। सो इस वाले का देख लेना, ये है DEPEA 515। ठीक है, ये आपका ग्रुप है PEA। ओके, P for professional enhancement and A for analytical. So this is a class of analytical actually. So this is your group, okay? DEPEA 515. All right. Okay, so look at here. The average weight of a class of 24 student is 30 kg. Okay, again, in this class, the total strength is 24. Okay, and the average is 30. So average is 30. Now, when the teacher is also included, the average weight is increased by 1 kg. So again, first point is we will assume the teacher's age is weight is also 30 kg. ठीक है, but due to this there is no effect in the average. ठीक है, अगर ये भी 30 kg का होता तो You कोई have effect 5 नहीं minutes पड़ता। remaining. ठीक है, but according to the question the average is increased by 1। इसका मतलब है अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा वेट लेके आया होगा, वही वेट बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है, so now if it is increased by 1 kg, it means now the total strength would be what? 24 student and 1 teacher. So now the total strength is 25. So 25 students now increase by 1. Okay, because I told you कि अगर एवरेज एक बढ़ता है, ये चीज हमने डिस्कस की थी,
if average increase by 1, it means the whole group is increased by 1 kg. ठीक है, अब अगर टीचर भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा तो ग्रुप में अब कितने लोग हो गए? 24 स्टूडेंट ऑलरेडी थे, एक टीचर और जुड़ गया 25. ठीक है, सो 25 स्टूडेंट जो है, 25 का जो ग्रुप है वो एक एक इंक्रीज हो गया, तो टोटल एक्स्ट्रा इंक्रीज कितना हुआ? 25. So his age would be 30 plus 25, that would be 55. So you can do it mentally actually, right? Because you need to calculate only this part, isn't it? This extra. बस आपको माइंड में सोचना है 30 तो होगा ही होगा, साथ में कुछ एक्स्ट्रा होगा. वो एक्स्ट्रा कितना है? 25 into 1, isn't it? You don't need even pen, paper, anything. Okay, good. Vikrant, I will share the PPT in LPU Live. Just download the LPU Live from the Play Store. I will share it into your group. गाड़ी पीछे से गाड़ी आ रही, चलो जाने 85, okay. The average weight of 8% increased by 2.5 when a new person comes in place of one whose weighting is 65. अब देखो, the number of person is not given. ठीक है, number of person is not given, लेकिन एक 65 weight का बंदा बाहर गया और इसकी जगह पे कोई नया आ गया. This is the case. So 65 is going and another person is coming. उसकी वजह से average 2.5 increase हो गया. ठीक है, the number of person is 8 already. It is given 8. ठीक है, so now 65 गया and एक दूसरा बंदा आया. अब अगेन हम वो अज्यूम करेंगे कि अगर ये भी 65 का होता, जो 65 जा रहा है वही 65 अगर आ रहा है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट इस न्यू पर्सन के आने से एवरेज इंक्रीज हो गया. ठीक है, सो एवरेज इंक्रीज हो गया, इट मींस ही इज कैरिंग सम एक्स्ट्रा वेट विद हिम, राइट? एंड दैट एक्स्ट्रा इज द टोटल इज इंक्रीज बाय 2.5. नाउ लुक एट हियर, 8% इज इंक्रीज बाय 2.5, so 8 into 2.5, this is the total extra weight. Okay, so 8 into 2.5 gives you 16 plus 4, 20. 20. So 20 plus 65, that would be 85. So 85 is the correct answer. Yes, correct. Very good. Okay. So थोड़ा सा आज जो है नेटवर्क थोड़ा सा इशू रहा, उसके लिए सॉरी. ठीक है सर, एक जो क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन जो था ग्रुप एवरेज का, उसका आंसर नहीं मिल रहा था, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं? ये वाला 36 into फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ग्रुप, हाँ 36 into 30 plus 24 into 40. अच्छा, जो वेटेड एवरेज का क्वेश्चन था. हाँ हाँ, कोई नहीं, आप एलपीयू लाइव पे हो अभी या नहीं, व्हाट्सएप आज ग्रुप, join किसी कर भी ग्रुप में? हाँ जी, व्हाट्सएप पे होंगे. हाँ, व्हाट्सएप पे हो ना, तो आप उसमें डाल देना. ठीक है, मैं पीपीटी दोनों में शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से Okay. स्क्रीनशॉट लेके आप ग्रुप में डाल देना, मुझे टैग कर देना. ओके ओके सर, ओके. ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन. Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.